kids, you all are again welcome in your EVS class. Today in our universe we are going to start our second module, and the content which we are going to learn in this module is about sun. So without wasting any time, let's start our day. Hello my lovely kids. A very lovely good morning to all. I hope you all are well. Children, we have already introduced about family members of the sun. That means solar system. I told you that there are 8 planets altogether in the solar system that moves around the sun in a fixed orbit. And these are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Can you tell me students, who gives us heat and light during the daytime? Right, that is sun. अच्छा इमेजिन कीजिए कि अगर सन नहीं होता तो क्या होता? चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस होती। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि विदाउट सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। यू नो चिल्ड्रन, देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। वी कैन नॉट काउंट देम। एवरी स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, बट दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। सन इज आल्सो अ स्टार. इट इज क्लोजर टू द अर्थ than the other stars. So, let's get started with the sun. The sun is a star. It looks like a huge ball of fire that shines in the sky during the daytime. It is made up of hot gases. The sunlight of the sun takes an average of 8 minutes and 20 seconds to reach on the earth. The sun rises in the east, the day begins and sets in the west. In the evening, we all need sunlight because green plants make their food in the presence of sunlight. Flowers bloom in the sunlight, fruits ripe due to sun's heat. So, plants, animals and human beings will not be able to live without sun. Sun makes life possible on the earth and it is the main source of heat and light. Children, we have already read about some of the sun festivals in the chapter Our Culture, and those festivals were Pongal, Makar Sankranti and Chhath Puja. In our India, people worship sun as God. Children, क्या आपने कभी रेनबो देखा है? Yes, आपने कभी ना कभी तो रेनबो देखा ही होगा। ये सन की लाइट का मैजिक है। अब आप कहोगे वो कैसे? So, let me explain. You know children, सन की लाइट व्हाइट कलर की होती है एंड व्हाइट कलर 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। मींस व्हाइट कलर इज कंपोज्ड बाय 7 डिफरेंट कलर्स। व्हाइट कलर में 7 कलर का सीक्रेट सबसे पहले साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन ने बताया था। अब बात करते हैं रेन वाटर ड्रॉपलेट्स की। तो रेन वाटर ड्रॉपलेट्स एक ग्लास के प्रिज्म के जैसे वर्क करती है। उस ड्रॉपलेट से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो ये व्हाइट लाइट में प्रेजेंट 7 कलर्स को डिस्पर्स कर देती है और ये 7 कलर्स रेनबो के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये व्हाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होके 7 कलर्स में शो करने लगी। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय रेन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड रेनबो इज फॉर्म ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ सन। आप रेनबो के 7 कलर्स को करेक्ट ऑर्डर में इजीली लर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ विबजियोर का नेम लर्न करना है और अब हम इस नेम से सभी लेटर्स के कलर्स नेम लर्न करेंगे। एंड यू नो स्टूडेंट्स, जब भी रेनबो फॉर्म होता है तो वो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। वो कभी भी सामने फॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज सन की लाइट इतनी तेज होती है कि अगर वो सन के सामने फॉर्म होगा तो आपको दिखाई ही नहीं देगा। I hope you have enjoyed this lesson so much. So, now it's time to see what we have learned from MCQs. Question number 1 is, Sun is a coin, star, planet or stone? Correct answer is star. Now, next question is, Flash gives us heat and light. Sun, moon, cloud or rain? Correct answer is sun. Now, next question is, people worship of sun as goddess, devil, God or none of these? The correct answer is God.
Now our next question is, white color is composed by dash different colors, 2, 4, 5 or 7. The correct answer is 7. Now students, after checking your knowledge, it's time to practice questions given from the content. So let's move to practice time. Let's see what's given here. Draw and color a rainbow and write the colors name. Students, आपको क्या करना है? एक रेनबो ड्रॉ करना है एज वेल एज उसे कलर करना है एंड देन आपको ऑर्डर में कलर्स के नेम राइट करने हैं. That's it for today kids. I hope you have enjoyed this lesson a lot. So till then, keep learning, keep growing, keep watching your previous videos. Stay home, stay safe, wear mask, follow hygiene, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.